Hello guys, myself Hanif Ahmad Lashkar from Silchar Assam. Presently I am preparing for both UPSC and APSC exam. In my experience I have found Sandeep Sir is one of the best UPSC faculty and his teaching methods, teaching skills and techniques benefited me more. तो अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप ऑनलाइन गाइडेंस लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ संदीप आईएएस एकेडमी, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और अपने इस जर्नी में मेंटरशिप और गाइडेंस लीजिए। इस एकेडमी के डायरेक्टर संदीप सर बहुत ही अच्छा टीचर है, बहुत ही अच्छा फैकल्टी है जिनके यूपीएससी फील्ड में 10 साल के लगभग तजुर्बा रहा है। Hello, this is Shilpi, one of the beneficiaries from Sandeep Science Academy. I have benefited from these classes in terms of the notes and video lectures, which is free of cost and easily available on YouTube. And sir has helped me in each and every direction whenever I needed. एवरीवन, मैं संदीप सर की स्टूडेंट हूँ। मैं सर के बारे में यही बताऊंगी कि सर बहुत अच्छे टीचर ही नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो किसी भी टॉपिक को इतने अच्छे से, इतने सिंपली तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाए। बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके पढ़ाने का तरीका। Hi guys, are you searching guidance for UPSC preparation? Then you can apparently join Sandeep's IAS Academy. I think to travel UPSC journey, concept transparency and counseling is the route. In Sandeep's IAS Academy, director of this academy Sandeep sir, as a mentor, motivator and instructor, guide each and every student and make each and every concept crystal clear. Hello everyone, I am Lakshmi and I belong to the Muzaffarpur, and since I belong to the Bihar, and that's why my English is too much weak, and that's why I found Sandeep Sir's IAS Academy is very beneficial for me because he delivered his speech in both the English and Hindi medium, and that's why I can easily understand whatever he is depicting. And due to his efforts, my English has become too much good, and I can deliver my speech in English freely. Hello guys, this is Mitali Raj and I am doing preparation for UPSC in Sandeep IAS Academy. And first I would like to say something about Sir Sandeep sir. Along with the teacher, he is a motivational speaker, he is a counselor, he is a writer as well, and he is a very nice person. As we know that in this scenario, in this situation, though we are attending online classes, even then our classes is as much effective, as much interesting as offline classes. It's all because of Sandeep sir, his pedagogical skill. Because he everything he deliver, whatever he deliver, whatever the concept he deliver in English as well as in Hindi. Hello everyone, being a civil service aspirant, I was started my journey with the help of Sandeep sir. He is my best teacher as he clear all the concept very deeply, and he help us to memorize every topic in such a way that we can't forget ever. Hello everyone, I'm Naimoy and I was a student of Sandeep sir in Arunachal Pradesh. Sir is a very motivating and inspiring person. He will always guide you and motivate you throughout his entire classes, and be it any queries or any other matters, he will always be there for you to guide you and help you entirely. And Namaskar, my name is Kriti Pal. Here I would like to express my gratitude towards Sandeep sir. He is such a great mentor and a positive force around his students. He has been extremely supportive through this difficult time. Firstly, I would like to say that he explains every topic of GS in a very lucid manner, and secondly, he focuses on all students individually. सभी को मैं बताऊँ, मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। मैं संदीप सर का स्टूडेंट हूँ, और संदीप सर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो संदीप सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। सर किसी भी टॉपिक को जब समझाते हैं तो एक कहानी लेके हमें समझाते हैं,
और उनका जो किसी भी स्टूडेंट को जब वो समझाते हैं तो वो स्टूडेंट को स्टूडेंट के तौर पे नहीं लेते, एक दोस्त की तरह समझाते हैं, ताकि उस स्टूडेंट को भी लगे कि हाँ ये हमारे टीचर नहीं बल्कि फ्रेंड है, ताकि एक दूसरे का जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। Hi, this is Nang Munmun Ling from Arunachal Pradesh and I'm student of Sandeep Kumar sir. I have learned so much in his class that I don't know from where to start. He used to ask questions in class and gets the student to respond, which is both fun and promotes faster learning. He gives many examples, existing examples in our daily lives so that we can connect and easily understand and to never forget. My name is Marli Riba from Arunachal Pradesh, and I've been under the guidance of Mr. Sandeep Kumar sir as a student. To sir, I hope everything is okay in your family, at your hometown, and to the viewers, whoever would be watching this, I just wanted to tell you that I can assure you, you will love his company, as he is an awesome man, a very knowledgeable person and very approachable. Hi, I am Madhuri Manath and today I am here to give you a solid reason as for why one must choose Sandeep's IAS Academy over so many other institutes. Trust me when I say he is the best guide one can ever have, then yes, it is true. I myself have been attending his classes for over a year now, and he is the best teacher I have ever had. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आज बात करूँगा संदीप सर और संदीप IAS एकेडमी की। मैं संदीप सर की बात करूँगा। संदीप सर से मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। संदीप सर से मैं मुजफ्फरपुर पुलिस पाठशाला के माध्यम से जुड़ा था। उसके बाद से सर से मैं ऑनलाइन क्लास लिया हूँ। सर से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव रहा मेरे लिए। पॉजिटिव इसलिए रहा कि पहले एक डर लगता था। सर का क्लास अटेंड करने के बाद एक तो अंदर से सारा डर ख़त्म हो गया मेरा। उसके बाद सर से करंट अफेयर्स कैसे अप्रोच करना है, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करना है, GS पेपर कैसे पढ़ना है, सर इतना अच्छा से मोटिवेट होकर पढ़ाते हैं कि जानते हैं कि सबसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पॉजिटिव और मोटिवेट कैसे रहना है। सर के पढ़ाई से ये हर सारे टॉपिक्स में लगता है कि पॉजिटिव ही है। हेलो, दिस इज़ रिवोल्यूशन लश्कर एंड आई एम फ्रॉम सिलचर असम। मैं पिछले 3-4 साल से UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और स्टेट PCS एग्ज़ाम का भी। सब मैंने संदीप IAS एकेडमी पिछले साल यानी 2020 में ज्वाइन किया था, जो बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे PCS जर्नी में। जो लोग सोच रहे हैं कि PCS या UPSC के प्रिपरेशन करने को, दे कैन ज्वाइन संदीप IAS एकेडमी। हेलो एवरीवन, मैं RJ केनी। मैं संदीप कुमार सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। संदीप कुमार सर हमारे यहाँ काफी शोज कर चुके हैं, एजुकेशनल और मोटिवेशनल से जुड़े। जब भी वे शो करते थे तो हमें काफी मोटिवेट करते थे। उनके शो के दौरान जब भी किसी लिसनर का कॉल आता था तो वो यहीं पे रहकर उन्हें अच्छी तरह सिखाते थे। हम उनसे काफी मोटिवेट हुए हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखे हैं। मुझे तो जब भी समय मिलता है तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ। हेलो एवरीवन, आकांक्षा बच्चाजी दिस साइड। I feel UPSC is not just an exam, it's a long journey which requires a lot of patience and hard work obviously. After some point of time we really find it difficult to carry on with our preparation if we don't have good guidance. Sandeep sir is not only an extraordinary teacher who tells us how to deal with each and every subject, but also his motivational speeches makes us aware that mental preparation is the ultimate thing in this journey. I can assure you that you won't be regretting after joining this institute if you are searching for any. Thank you. Hello everyone, my name is Vinita Chakraborty and I am a management student and I wish to sit for UPSC examination. It is said that the rarest of human quality is consistency, and it can be termed as the other name of UPSC. It is a long journey and needs utmost patience
and guidance. I came across Sandeep Sir's demo classes, and I must say that he is a brilliant teacher with utmost teaching techniques. Along with his teachings, his motivational talks will definitely let you remain focused to your dream destination. I'm definitely planning to join this institution and can assure you that you too won't be regretting after joining it too. Thank you and keep learning.